हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जूलॉजी का सिलेबस बताऊंगी। यूपी पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस जो कि इंग्लिश में है, उसमें जूलॉजी का आज मैं बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉटनी का बताऊंगी। तो सिलेबस आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सिलेबस कंप्लीट करूँगी जूलॉजी के। फर्स्ट है नॉन कॉर्डेड। नॉन कॉर्डेड्स में हम पढ़ेंगे जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइला, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंटामोeba एंड पैरामीशियम, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकॉन, polymorphism in cylindrids, structure and life history of Boucheria bancrofti, adaptive radiation of Polychaeta, structure and life history of Hirudinaria, leech, larval form and parasitism in crustacean, structure and life history of Pila, जिसको हम पॉन्ड स्नेल भी कहते हैं, larval form and parasitism in crustacean, structure and life history of Pila, pond snail, larval form of Echinodermata, structure and life history of starfish. Now comes to chordata. इन कॉर्डेट्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट एंड टेट्रापोडा, स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्डमानिया एंड एम्फियोक्सस, माइग्रेशन ऑफ फिशेज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन स्कोलोडॉन, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, structure and function in Euromastrix, poisonous and non-poisonous snakes of India, migration and flight adaptation in birds, structure and functions in Columba, general characteristics and affinities of Prototheria, Metatheria and Eutheria, comparative anatomy of digestive, circulatory, respiratory, excretory and reproductive system of vertebrates. Now comes to animal development, that is third point. In animal development, we study outlines of development of amphioxus from anchic placentation and evolution in mammals, metamorphosis in insects, regulation of cellular differentiation. Now comes to evolution. In evolution, we study theories and evidences of evolution, genes in population, micro, macro and mega evolution, taxonomy, procedure in taxonomy, species concept, artificial versus natural classification, environmental biology and toxicology, ecosystem, homeostasis, population, inter and intra-specific relation, ecofactors with special reference to limitation factor, aquatic and terrestrial habitats, natural resources and their conservation, scope of toxicology and survey of environment, toxicants, selective toxicity and antidatal procedure, environmental management. Now comes to wildlife. In wildlife, we study general study of wildlife and endangered wild animals of India, wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserve in India, activities of various organizations for the conservation of wildlife, economic zoology, protozoan and helminthus parasites causing human disease culture, lake culture, sericulture, pearl culture and fish culture industries, general survey of economically important mammals, pharmaceuticals, farm animals, biostatics, elementary idea of internal tendency and variation in data, test, probability analysis of variance, hypothesis, chi-square test, normal distribution, binomial distribution, Bayesian distribution. Now comes to physiology and biochemistry. In physiology and biochemistry we study digestion and absorption of food, nutritive requirement in balanced diet, regulation hunger and secretion of digestive juice, regulation of breathing and transport of gases, physiological categories of heart and regulation of heartbeat,
blood pressure and blood volume, patterns of nitrogen excretion in different animals, salts and water balance, ultrastructure of muscle contraction, endocrine organs and their secretions, regulatory action of hormones at the cellular levels, law of mass action, elementary thermodynamics, kinetics of enzymes reaction, coenzymes, basics of immune response, aids energy production from carbohydrate, lipids and amino acids. Now comes to animal behavior. In animal behavior we study behavioral categories, stereotype and learning behavior, communication among animals, sexual behavior, migration behavior, reference to fish and birds, instinct, cytogenetics, ultrastructure and functions of cell organelles, chromosomal structure, type and aberration, DNA replication, gene interactional, cytoplasmic inheritance, sex linked inheritance, linkage, crossing over, lethal genes, protein synthesis, principles of biotechnology, elements of prokaryotic genetics, genetic recombination, transformation, conjugation and transcriptional plasmids, and role of genetics, basic principle of genetic engineering, microbes of economic importance and their application in human welfare. फ्रेंड्स, आप इन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो में मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगी और आप सारी इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना के दूंगी और आप उसको नोट डाउन करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉटनी के टीजीटी का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस शेयर करूँगी, उसको भी आप नोट डाउन करिए और मैं उसको भी वीडियोस में अपने उसके भी सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी। सो like my channel, share it and subscribe it. Thank you friends. Thank you so much.